अभी हम लोगों ने कृष्णा आपको हल्का सा एक छोटा सा डेंट दिया है, ठीक है, we have just given you a taste कि like oh we have arrived or we are coming with full force. So winter's coming. Yeah, winter's coming. You know nothing, Jon Snow. No, nothing. Yes, competitors. Yes. So basically, like, yes, हमने आपको थोड़ा सा taste दिया है, and yes, slowly and gradually we are evolving, and we are evolving very strong, and creatively, yes, we are evolving very strong. So yes, मेरे ख्याल से हमारा बहुत emerging भी सिनेमा है, और अभी आगे और 5-6 साल दें तो मैं डेफिनेटली हम आपके जो 100 साल हैं उनको भी कोप अप कर लेंगे. Wow, now that's confident. But that's also, I think that you have a very realistic grip on what's happening. Which is good. Yeah. Let's talk about your process for films and your process for dramas. I think there's obviously world of a difference between both these mediums. When we talk about films, there's a different kind of focus that gets involved. There's a bigger scale, and then you have a limited amount in which you are in that particular character. The storylines can only evolve so much, and then there's not that process of जो आजकल ड्रामों के अंदर process शुरू हो गई, ये TRP. भाई जो TRP लाए तो बस उसमें अगर वो रोती धोती औरत है तो वो 25 एपिसोड तक रोती है. Exactly. ठीक है, अगर वो मर्द पिटाई कर रहा है तो 25 एपिसोड तक पिटाई करता है. So there's this difference, and you've worked in both these mediums. Talk about how different your process is for both of these mediums. Okay. The process is pretty much the same, to be really honest. I won't lie. ठीक है, now process is like a zone do you get into which is different for films? For films, I mean, yes, you have to get into a certain zone. Okay. For films, because I mean, film, no doubt, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त no doubt drama industry is bigger than cinema. Yeah. ठीक है. Yeah. लेकिन overall in the world, ठीक है, आपका सिनेमा हमेशा ज़्यादा recognizable होता है. ठीक है. सिनेमा की नेचुरली उसकी जो पोजीशनिंग है, ठीक है, वो ड्रामे से हमेशा थोड़ी सी ऊपर रहती है. सो जो प्रोसेस है फिल्म का वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, कि लाइक यस आपको एक सर्टेन जोन में जाना पड़ता है, आपको एक सर्टेन होमवर्क करके आना पड़ता है, एंड प्लस फिल्म आपको एक सर्टेन टाइम देती है कि गेट इनटू द कैरेक्टर, टू डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली, टू रिहर्स. वेल ऑन द अदर हैंड on drama set, I mean, you don't get that much of a time on your hand basically to prepare with your characters, to work around your environment. So वो आपको इतना टाइम मिलता नहीं है. But having said that, दोनों का process pretty much the same है. But क्यों ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि depends on the director. Entirely depends on the director. ठीक है. Like in Man Maya, for example, ठीक है, and in Digest Writer. My directors were like very accommodating and very forthcoming. Let's rehearse. Let's talk about the character and its background and what's going to be its mannerism or your side cheeses. So they were very forthcoming. Well, on the other hand, बाकी कुछ sets होते हैं ऐसे, लेकिन ये director की choice है. That doesn't define the process. So you're a director's actor. I'm a complete director's actor. Completely director's actor. I mean, like my director tells me कि यार अब like in Rangreeza, ठीक है, मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ा होता हूँ, और I mean आमिर used to come up to me and say कि गौहर इसमें कुछ कर दे, ठीक है, मुझे कुछ दिखा दे, कुछ ऐसा कर दे, कुछ वैसा कर दे. I mean, just because he knows, I mean, how I operate now. Right. So वो मुझे हल्की सी टिप देगा, and I'm just going to give it that to him कि अच्छा ये सही है, ये सही है. So he will be like, so yes, I'm a director's actor, and the process entirely depends कि how director takes it forward. आपका डायरेक्टर कैसे आगे लेके जाता है. अगर आपका डायरेक्टर ही जल्दी में है, उसको दिन के 15-20 सीन करने हैं, ठीक है, ड्रामा के सेट पे, सो ऑब्वियसली आपके पास फिर रिहर्सल का टाइम भी नहीं है, ठीक है, किसी चीज का टाइम नहीं. लेकिन अगर आपका डायरेक्टर डेडिकेटेड है और फोकस्ड है, तो वो फिर आपको टाइम देता है कि अच्छा यार मेक द सीन, यू वांट टू वर्क अराउंड एनवायरनमेंट. जैसे इन मन माइंड में आई स्टिल रिमेंबर, मैं हसीब भाई को मैं बहुत दफा कहता था कि हसीब भाई मैंने ऐसा करना है ये सीन. सो ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी दैट लिबर्टी कि हाँ चलो ठीक है, I'll work around you. You don't have to work around me. ठीक है, I'll work around you. He gave me the space. हाँ, he gave me the space. He gave me an open ground. Just play around. Do whatever you want. So that gives then फिर एक्टर भी आपको परफॉर्म करके देता है. लेकिन अगर आपने ये सर पे बंदूक रखी हुई है कि यार आपने 15-20 सीन करने हैं दिन के, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी है, टाइम निकल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फिर एक्टर भी कहता है अच्छा चलो बताओ क्या करना है करके सारा कुछ कर देता है. हाँ हो गया पैकअप, हाँ ठीक है ना. सो फिर ये हो जाता है. So I mean आपको खुद डिफरेंस नजर आता होगा. There are a couple of drama serials जिसके अंदर कुछ एक्टर्स बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है,
और फिर वही एक्टर्स आप दूसरे ड्रामा में देखते हो तो आप कहते हैं यार ये क्या परफॉर्म किया, ये ज़ॉम्बी बना हुआ है, हाँ ये ज़ॉम्बी बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टर का मसला नहीं है, ठीक है, ना ही प्रोसेस में कोई मसला है, ये डायरेक्टर्स कॉल होती है कि यार अच्छा यार मुझे 15-20 सीन करने देंगे, ठीक है, तुम जल्दी करो, तो बस फिर आप जल्दी का काम तो शैतान का है। अच्छा, ये speaking of Manmail and speaking of the award you got. You got the Best Supporting Actor award at IPA. Congratulations! Yay! Thank you! Yay! So, I had a lot of issues with Manmail's plot, but it was a raving success, and people loved it. And I got so much hate for having issues with the plot. But that aside, the phenomena, the fandom ऐसी होती है भाई. So ये जो आपका जो character था, एक इंतहाई मतलब annoying I know, I can and वो स्क्रीन पे आता था तो सबको नफरत छूट हाँ सबको ये नेगेटिविटी क्या फॉलो करती है ना। I ask everybody this who's done negative roles के यार do they throw eggs at you and they say कि देखा है हमने तुमको, खबरदार हमारी मन्नू के साथ ऐसा किया तुमने। हाँ इस तरह के रिएक्शंस बहुत मिलते थे, really honest, बहुत मैसिव और बड़े एग्रेसिव किस्म के रिएक्शंस मिलते थे। What was like the weirdest reaction you got? The weirdest, I mean, and I've also spoken about this reaction in one of my interviews. I went to with my friends. I went to watch a movie in a cinema hall. और वहाँ पर बड़ी लड़की बहुत तमीज़दार कुछ ख़वातीन खड़ी हुई थी, ठीक है, मिड एज, ठीक है, वो लोग खड़ी हुई थी और मैं बस I just passed by. उन्होंने एकदम से मुझे रोका, excuse me, अच्छा I thought कि कोई फैन होगा, फैन मोमेंट, ऑटोग्राफ लेने आया, ऑटोग्राफ, जी मैं गोहर रशीद जी, So like मैंने कहा अच्छा मैं बड़ा humbly या मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आप मिकाइल हैं? जी मैं अच्छा यहाँ तक था, मैंने कहा जी गड़बड़ हो रही है, हाँ मैं तो कहती हैं with straight face, ठीक है, मुझे कहा कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं वरना I'm actually going to slap you. अच्छा फर्स्ट आई थॉट कि शायद मजाक कर रही है ना, ऐसे कौन करता है, ठीक है, मैं आगे से हंस पड़ा और वो नहीं हंस रही, वो नहीं हंस रही, वो नहीं हंस रही, ठीक है, और मैं हंस रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और मेरे एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उनके पीछे मम्मी जो उनका ग्रुप था एक और खातून आई सामने और उन्होंने कहा प्लीज लीव वरना ये एक्चुअली चपेट मार देगी। Oh my! And I was like, okay, now this is getting serious now. Okay, that's a drama. Calm down, ladies. Calm down. Please. You want some cold drink, popcorns? I can get you some. You missed an opportunity from getting popcorn. Yeah, you should from have. Gohar Rasheed. Exactly. आपने काम चपेट वाला काम कर दिया। चपेट वाला काम शुरू कर दिया। So yeah, I mean like ये एक बड़ा I mean on an extreme एक reaction मुझे मिला था from Manmail. So which I think which defines the success of the character. Yeah, if you the hate, reach. Yeah, and the reach of the character. Like I mean like अगर उसको इतना नापसंद किया जा रहा है तो कुछ तो ठीक कर रहा है। हाँ अच्छा और मजे की बात है when I was watching I mean it was like for me it was like one of those things कि I can't look away, but I can't stop watching, and it was something like that for me. So, your character was also somebody who, वो जो एक typical male, chauvinist, spoiled, brat, slightly psychopathic person. He did seem kind of crazy, unhinged. So, does it get difficult to do those kind of roles? We're talking about the reaction now, but like when you come to do a character which is so inherently negative and most probably not like you at all. Yeah. So I'm sure you don't like भाग जाओ यहाँ से मैं आपका सीन खोलूँगा. So I'm sure you don't do that to people who love you, but yeah, it was quite impossible in so many ways. And there was a next level evil to that person. Yes, when we're like to be really honest, as an actor, I think that is my job to observe. Is it fun for you? Those characters. Honestly speaking, very honestly speaking. Yeah. I love playing a baddie. Call me whatever. ठीक है, I love playing. मैं बता रहा हूँ मेवेश, जितना मजा, ठीक है, और जितनी भड़ास अच्छा आपकी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में निकलती है ना, like you can slap anybody, you can beat the shit out of anybody, ठीक है, you can just go down, repressed desires सारी, हाँ सारी ना, जितना आपका गुस्सा है वो सब आप निकाल देते हो और उसपे आपको प्लस मिल रहा होता है कि वाह क्या एक्टिंग की आपने। ठीक है ना, हीरो बेचारे क्या करना है, ठीक है, हीरो बेचारा बस ज्यादा ठीक है खड़ा है पहाड़ों में, हीरोइन का इंतजार कर रहा है, बारिश में इंतजार कर रहा है, और हीरोइन भी शुरू पूरी फिल्म में विलन के साथ, मैं बैडी के साथ एंड में मिलती है, ठीक है ना। So you did relate to that on some level. No, I mean I didn't relate to that, but yes, I mean like to be really honest, जिस तरीके से
I consider myself very, very fortunate that I get to play such different and diverse characters. Yeah. In which I could take out my frustration and everything. I take them out. You don't want to find out what's going on inside his head. Yeah, I mean, like, to be really honest, everybody gets frustrated. At one point of their time. You take out that steam. Yeah, take out that steam out of your system basically. Yeah, true. So I mean, like, उस वजह से ना मुझे बैटी कैरेक्टर्स प्ले करने में बड़ा मजा आता है. And yes, for Mikhail, I mean, it was a little difficult for me to just get some references because it was not something which is very overboard. The character wasn't somebody who was very loud, so one has to keep it, has to draw a certain line and has to stay within those boundaries. Yeah. So it was like kind of like tricky. Yeah. कि like अगर आप थोड़े से ज़्यादा psychopath हो गए तो फिर आप psychopath ही हो गए, ठीक है. अगर आप थोड़े से ज़्यादा romantic हो गए तो फिर तो आप villain ही ना रहे, ठीक है. Because in the initial episodes, I mean, वो थोड़ा सा एक अच्छा boy की जब रिश्ता देखने आते हैं, remember, like वो अच्छा. Nobody guessed it that he will turn out to be this way. Yeah. So yes, it was very thin lines. I mean, like Samira Fazal, who was the writer, and the director, Haseeb Hassan. I mean, they have drawn very thin lines. कि उसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे. अच्छा ये ज़्यादा हो रहा है, ज़रा कम कर लेते हैं. So इस तरीके से, one has to be a little observant in their surroundings. कि अच्छा किसी को जब गुस्सा आता है या फिर कोई react करता है तो वो किसी से react करता है. So Mikhail was a character which was like a mixture of कुछ मैंने यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया.